गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आपने पूरा वीक देखा है, इट्स टोटली ऑन द डाउन साइड। और अभी मेन तो इश्यू बैंक्स का, जो भी यूरोपियन बैंक्स में अभी जिस तरह से चल रहा है मार्केट, एंड डॉइचे बैंक, जहाँ पर विच इज द लोवेस्ट राइट नाउ इन बैंक्स, जो भी प्राइस है उसका। तो मेन इश्यू वहां पर ये है कि जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है। हाँ सर, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है दैट हैज इंक्रीज्ड। सो इंश्योरेंस का प्रीमियम क्यों बढ़ा है? क्योंकि उनके पास जो एसेट्स है, उनका जो भी रीवैल्यूएशन या रीजिक हुआ है, उसकी वजह से उनको ये लग रहा है इंश्योरेंस वालों को कि दे हैव स्ट्रेस्ड एसेट्स। उसके लिए वजह से री इंश्योरेंस का पैसा बढ़ गया है। तो दिस इज द मेन रीजन व्हाई द बैंक्स आर ब्लीडिंग राइट नाउ इन यूरोप। तो यहाँ पर तो अभी हमको कुछ, वी आर इंसुलेटेड राइट नाउ ओवरऑल इफ यू सी। बट जैसे ही अप्रैल का महीना आएगा, वी विल बी स्टार्टिंग टू हैव द रिजल्ट सीजन। तो वी हैव टू सी व्हाट कम्स अप फॉर द रिजल्ट्स। तो आईटी या रिलायंस जो भी है बैंक्स है, उसमें एमटीएम का, बैंक्स में स्पेशली एमटीएम का लॉसेस है कि नहीं, वो देखना है। बाकी आईटी का रिजल्ट्स वो भी देखना पड़ेगा एज सच। बाकी मार्केट is in totally euphoric right now with maximum positions of shorts by FIIs, which they are carrying for the past 1 month. एंड उनको कोई, यानी ऐसा लग रहा है कि वो शॉर्ट करके सो गए हैं एफआई वाले, बिकॉज दे डोंट हैव एनी मूड टू स्क्वायर ऑफ राइट नाउ। एज श्रीनी सेज कि दे थिंक द लीनियर वे। वो कभी आगे पीछे जिगजैग वे पे नहीं सोचते कि अभी लिया 1 घंटे के बाद बेच दिया। तो उन्होंने शॉर्ट किया है, तो दे आर थिंकिंग द बिग टारगेट्स विच आई परसीव। So let's see what's in store for us for the expiry, which will be coming up this Thursday. That's it from my end. Srini, good evening. Good evening, Samarth bhai. Not much to add. I see a lot of risk on the downside. I mean, the earnings, whatever they are, there is two parts. One is like that Ashwath Damodaran said. एक होता है डेटा, एक होता है स्टोरी. अपने यहाँ तो दोनों बहुत चलता है. And there's a third underlying thing which is sentiment. I feel earnings may come out. I'm no expert, but because the consumer pack is only a small part, and the biggies are the financials. I don't know how to model their earnings, but yeah, the narrative and the story is definitely breaking down. And मैं एक ही point बोलूँगा, people should watch out. जो the consumer kind of recession has hit now the upper rich class. So the guys who were spending in five-star hotels and crowds at airport and malls and all that, जो last year हमको Twitter पे सुनना पड़ा कि India economy is rocking because these guys are spending. That is now under serious damage, and I think this is the crowd who also invests in equities, the SIPs and discretionary funds and so on. So I don't think things will improve. They're clearly in the downward trajectory. मुझे तो बहुत ही रिस्क दिखता है ऑन दी एफआई शॉर्ट पोजीशन. समझ में एक्चुअली क्या हुआ, वो 2008-9 का डेटा आई थिंक समवन हैड प्रेजेंटेड, आई थिंक रोहित भाई. And what it showed in 2008, they were shorting and in US, that CFTC speculative futures or non-speculative, they were shorting, squaring off, shorting, getting short squeezed and so on. फिर एक टाइम आया, वो शॉर्ट करके बैठ गए एंड बढ़ाते गए. Market went up, went down, went up, went down. They didn't square off till like the very grand finale bottom. So I was thinking maybe that's the mood they're in right now. Because they're very simplistic. वो इंडियन बॉलीवुड मूवी की तरह नहीं है, 5 हीरो, 6 हीरोइन, सास बहू, साइड प्लॉट. वो बड़ा लीनियर operators है. I feel they're in that mode. They're not budging an inch on their shorts.
So that was my short uh, observations. I'll let others speak. या अभी बस एक, यस सर, नहीं, बोलिए बोलिए। या एक सर, जो आज के दिन में जो म्यूचुअल फंड में डेट स्कीम्स में जो आया है टैक्सेशन पर्पस से चेंजेस, दैट इज आल्सो डेट्रीमेंटल टू द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। जो भी अपना डेट स्कीम्स है वहां पर इंडेक्सेशन हैज बीन रिमूव्ड, so it will be at par with other instruments. And I don't think so now people who would be investing as such, rather than opting out for FD, they were investing in debt funds. अभी सब भाई लोग अभी वापस एफडी में आ जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर 8-8.25% इज सिक्योर्ड, whereas in liquid fund या short term duration fund they would be getting some good returns, but on a longer term part they are not getting that much, they are getting lower than the FDs. So this debt fund, I think there will be quite a good rejig in the month from starting from April, sir. For this thing, Deepak Shinoy is hosting a space. So people who are interested on this topic should visit them. Okay. And what Samad said about short selling by FIs, I don't agree with him. Whatever short positions are there, they are arbitrage. They are bought in Singapore and sold over here. In Singapore, the open interest is 2.75 times the open interest over here. So I feel they are not short. And, in one of the spaces, a gentleman who is a very nice orator and very knowledgeable, full control over language, called me a bully. So I said, I'm not a bully. I'm a gun. In my previous avatar, I was a gunda-like person. And if somebody gets angry at me, I really hit back. But that was pre 2013. Since 2013, I have mellowed down. I don't intend to initiate my bad behavior again. But if pursued and challenged unnecessarily and provoked, I can get the hell out of anybody in India. If I can go to Bhindi Bazaar with 6 people with swords and daring them, uh, uh, is just a skin on a lemon. वो बोलते हैं ना, हाथी चलता है तो चूहे भोगते हैं, वैसा हाल है. Okay, anyway, I was deeply disturbed. Thank you for listening to this. Now we move on to the markets. The way the markets are behaving, you can say because of my long experience, I can read markets, I can talk markets, I can talk to the market, I can talk to the tape. There are no buyers. Happily, there are no buyers. If a seller comes in, the price damage is humongous. Now take for example, Tata Power. Yesterday it had closed at 200 or 201. Today it closed at 190. The best part is, 2.5 years ago it was 30 rupees. Everybody has forgotten that. Memory in stock market is zero. So if you want to be a bit successful, you should have memory. Without memory, you are a failure. Now, at 192, and it had touched a high of 280 or 285 or thereabouts. The
Outstanding is almost 8, 9, 10 crores. Now, do you imagine who will buy all the shares? When there is an outstanding of 8, 10 crores, who will buy? People will get fed up and they will start throwing shares any which way, and then the mayhem will start. So, Tata Power, only an example. This Wednesday, on the expiry day, I foresee that there will be major irregular movements in the market. Now, take for example, what is that? Digital. No. Emphasis. The way it is dropping like mad. It had touched a high of 3200 or 3300 or whatever. आप देख लेना. Don't correct me. तो वो अभी आधा हो गया. ये आधा हो गया. तो क्या करने का? एक मिनट. Yeah. सब शेयर ऐसे डूब रहे हैं. टाटा स्टील 1580 मतलब 158-60 हुआ था. आज 100-105 जैसा भाव है. कुछ भी ले लो. But wherever there is operator or a promoter, those stocks are holding. And from my experience, I'm telling you, they would be the worst hit. They will fall the last, but they will be worst hit. Reliance, it came down from 2260 or so thereabouts today to 2200. So I thought huge volume must be there. And when I saw the volume, 57 lakhs. अभी 57 lakhs में 60 रुपया घटता है. It signifies there are no buyers. See, I have been raving and ranting about high prices, this, that, but everybody in their own. Now is the day of reckoning. Now you have started understanding. But I think by now it's too late. If you sell, there is a problem. If you don't sell, there is a problem. So, about this portfolio and all, sorry, my sincere advice, please, 40-50% get out of it. I read a tweet by Nitin of Zerodha. He said we are going back to March 2020 levels in terms of accounts. So all the ruffians and the Bang that came is going back. Who will buy your shares? Don't be dependent on me. I never buy shares except 6, 7 companies. So don't don't depend on me or on anybody else. And lastly, I'm saying this inflow in mutual fund. Suppose it peters down to 7,000 and there is some redemption. Who will buy? I saw in the month of March, locals have bought every day almost. I don't know the compulsion
Why would they buy shares like this? That whatever anybody selling, they buy. अरे यार वो क्यों लेता है? Then yesterday or today there was this deal in campus shoes. अरे वाह 850 करोड़ का कुछ बेच दिया. अरे घुस गया सब म्यूचुअल फंडों में. अरे कैसा उल्लू बनाता है ये सब पब्लिक को. काय को लेता है ये सब शेयर. तुम कैंपस में जाके बेचेगा क्या कैंपस शूज को? नॉनसेंस है. आपका पैसे का चद्दर बनाया जा रहा है. उस पे कोई यूज कर रहा है चद्दर को. मत दो ये लोग को पैसा. बहुत ही बुरा हाल है. ये लोग अभी आईटीसी लेते हैं. आईटीसी ये भाव में 380 में बाप का नाम रखेगा. 300 हो जाएगा एक महीने में. फिर तो योर मनी इज अनसेफ. प्लीज सी फॉर मी whose father what goes. मेरा कुछ नहीं जाता. But because I have aged, there is lot of empathy in me. I want people to enjoy their money and not destroy their money. Remove the money, wait for 2-3 months, and then if you feel you are wrong, re-enter. What's the harm? Also another thing, 2024 is an election year. Now, all the nonsensical things have started. Arrest and this and that and whatnot. It's going to be a very, very, very painful year. And I'm not saying this for this year, 2023-24. I've seen this since 1980s. Whenever there is an election year, there is tumultuous moves either side. Before Rajiv Gandhi came in and the landmark markets were in doldrums all the time. But okay, his mother was killed and all that. But I have observed all the elections. 1 year before is too bad. Now, what will happen after 2024? See, actually, all said and done, I am a fundamentalist and a thinker. I would like to think in the future. People are, talk about the past, but for me, it's not at all relevant. So, 2024, Tata Power is at 20p. Have you ever heard in the entire universe that a utility company commands a P of 20 when it's 192, and when it was 280, how much would be the P? Come on, yaar. This is stock market, your hard-earned money. What are you buying? Why are you buying? Have you any sense that utilities cannot be bought at 20p? Are you alright in your head to buy 60p automobile company? Go to a psychiatrist. Why are you buying it? Please explain. Just because it's going to go up, that is no reason to buy. What is the underlying value?
what is the, how would I say, the intrinsic value? How do I calculate intrinsic value? Earning multiplied by P ratio. That's the intrinsic value. Now, what are we paying? How much are we paying? Lever 55. What joy. Tata Consumer 60 PE. एक चाय का कंपनी को, माय गुडनेस, पूरा जिंदगी में 100 150 में ट्रेडिंग किया है पूरा टाइम, और तुम 700 में हंस हंस के लेते हैं. अरे पागल है क्या? All these advisors who are below 35 or 30 or whatsoever, they don't have any clue about valuations. They just want to take clients' money and pump into the market. That's not good. If someone were to pay me 2% and say, here is 100 crores, you deploy, I would say, please, sorry, I don't want your 2%, because I don't want you to lose 20 crores, 30 crores on 100 crores. So, whereas people are not at all sincere, or they don't have the ethics. Yeah, come on, yeah, for money, 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 money. Another thing, is this a stock market or a monopoly game? I sat down last weekend and concluded it's a monopoly game. मेरे को मन में आया, मैं ये ले लिया. अरे क्यों लिया, कैसे लिया, क्या लिया, ले लिया, अच्छा लगा. So it's not a stock market, it's a monopoly game which children are playing, and they will end up playing to the hilt and burn all the cards they have. That's it. Somebody else take over, please. Yeah, Abhishek. Yes, good evening, everyone. So there's this one thing I want to talk about the DII buying, which Sir just mentioned. So every day you see, they will somehow try to take the market up either in the morning first half or the evening second half. So let's say they take it up in the morning with all their might, all the LIC, I don't know who not, what not, and they have only one option to buy, and that's banking. There's nothing else that they can do with. So HDFC Twins are the ones that are moving the market every day. They take it up by probably 100 points or so. Then in the second half, if it goes up in the first half, then second half our FIS start selling left, right, center like there's no tomorrow, and they don't have an exit at all. So then the entire up move gets taken out, and then plus some more after that, some more, maybe much more. But if you forget about the index and look at stocks, the kind of carnage, it's just insane. If you know how to catch stocks and hammer them, I you won't need the index at all to play. That is point number one. And then see, like sometimes what happens, there used to be a trend which was like 3 p.m. boys. They used to come start buying the market at 3 o'clock exactly. No, but what's the reason behind why should they be buying at only one particular time? Maybe like 15-minute window in the morning or 15-minute window in the evening. What's the matter? What's the problem? So the problem is they don't have enough money. So if they really had the money, they could have done the buying throughout the day and taken the market to 19,200. Reliance 3,000, HDFC 5,000, I don't know what not. Simple fact of the matter is, and it's common sense, because they don't have money, that's why they are moving the market only 15 minutes. That's all the money they have. That's something to ponder upon. And then you can just see that with the kind of laws laws or taxation or cess, whatever you call it, what the finance minister has been announcing of late, you can sense that the money is getting over. So that's one thing. Just a moment, Abhishek. Yes, sir. Yes, sir. Talking about institutions. In early 90s,
there used to be a curb, people on the street would gather and talk. Every day we would talk कि यूटीआई क्यों इतना माल लेता है, ऐसा चढ़ चढ़ के बिना फंडामेंटल का इतना माल लेता है, रोज लेता है. हम लोग रोज सोचने का और रोज बाल खींचने का जवाब ही नहीं मिले. फिर आया अचानक एक दिन डिफॉल्ट, यूटीआई का डिफॉल्ट हो गया. फिर वो गवर्नमेंट आया और सूटी का स्टेक बना. आई एम टेलिंग यू वेरी ब्रीफली, बट mark my words, within 3-4 months, RBI will have to open credit lines to mutual fund, equity mutual funds. That kind of redemption is expected. They won't be able to square off in the market, so they will take a loan. So, Abhishek, I think what I am saying is very absurd, but I think it will happen. Because there is no way out in this thin market. If you want to sell anything, how can you sell here? There is only a limited quantity which you can offload at a particular price, or 10 rupees lower or 10 rupees lower. Beyond that, there is no depth. So So there is that one is, interesting observation with yesterday's deal with HDFC AMC. So he did the deal at the price which was lower than the market price. Mhm. And then suddenly, after one day, the news comes out about the debt mutual funds thing. So which means Ah, he was in the know. Mr. JQG ka owner, he was in the know. So he did yes, not mind the obviously. discount. Yes, 100%. No two doubts about it. See, this is the kind of market we have. Totally porous, lot of corrupt people, and the mandarins in Delhi are, I don't know what they are up to. ऐसा थोड़ी होता है यार, पैसे के लिए ईमान बेच देता है. Shah, shameful. But the time is not far. RBI will have to open a window for a credit to Indian mutual funds. That's my reading. Yes, Sarvendra. पर आपने सो आपका भी एंगल वही है जो मेरा भी है. मेरा भी थॉट यही है कि दिस व्हिच आई हैव सेड सो मेनी टाइम्स इन द स्पेसेस दैट दिस इज अ ब्यूटीफुल केक. दिस इंडियन मार्केट कैप एंड एवरीथिंग, इट्स अ ब्यूटीफul केक, but it can never be eaten whole. You can't even have two big slices out of this, because जो हम ऊपर में गए थे 300 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे, उसका 1% भी बिकने आया ना 3 लाख करोड़. तो आज के डिलीवरी वॉल्यूम सबको मालूम है क्या है. दिन में 2000 करोड़ की डिलीवरी या तो आती है या तो जाती है ऑन एन एवरेज. तो अज्यूमिंग कि 2000 करोड़ भी दिन का बेचेंगे तो 150 दिन लगेगा, टू 150 वर्किंग डेज लगेगा वो 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप बेचने के लिए, विच इज 1% ऑफ द टोटल मार्केट कैप. तो 1% की भी प्रॉफिट बुकिंग कभी किसी ने सोच ली ना, तो वो करने के लिए भी आपको 150 दिन चाहिए. और 150 दिन की बैक टू बैक सेलिंग में इंडेक्स का क्या भाव होएगा वो हर आदमी खुद कैलकुलेट कर सकता है. सो आई डोंट नीड टू say that. So I will just rest my case by saying it's a too beautiful a cake, but it can never be eaten whole. Was I audible? समझ भाई क्या हुआ? सब लोग सन्नाटा हो गया. Yeah, नहीं Ravi, नहीं और बीच में कट Ravi, गया था. अच्छा, so what I was saying that this market is a beautiful cake. It's a very very beautiful cake, but it can never be eaten whole. 1% खाने के लिए भी आपको 150 दिन चाहिए. 200 करोड़ 2000 करोड़ की बैक टू बैक सेलिंग 150 डेज फ्लैट. तो जो जो सर बोल रहे हैं वो क्राइसिस तो आएगा ही, रिडेम्पशन क्राइसिस. तो इट इज इन देयर इन द सिस्टम. 80% of this 80-90% of this market cap would be in around 150 stocks, maybe whatever, I don't know, 200 stocks. उससे ज्यादा तो नहीं होंगे. तो ये पूरा 300 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है, दिस वुड बी मैक्सिमम 150-200 स्टॉक्स. उसमें 80-90% मार्केट कैप उसी में फंसा होगा. तो कहाँ है वॉल्यूम, किसको बेचोगे, कौन लेगा? आई डोंट नो. वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एवरीबडी टू बी एबल टू बुक आउट प्रॉफिट्स एंड स्माइल. सब लोग खुश नहीं रह पाएंगे. 1-2% लोग बेच पाए तो वो भी मुश्किल ही लगता है मुझे. 1% भी ये बेच नहीं पाएगा कोई. हाँ सागर, सागर आप बोलो.
Good evening, Sharad bhai, and all of our speakers and co-host. तो मार्केट पे मेरे भी बेयरिश है, ठीक है। बैंक निफ्टी को ये लोग रोक के रखे हुए हैं। बैंक निफ्टी में एक डाउन मूव बचा हुआ है, ठीक है। दैट विल बी ब्रूटल। भाई छोड़, माफ कर, इधर निफ्टी बैंक निफ्टी का बात नहीं होता है। इनका बात करूं शरद भाई तो बताइए, मार्केट के बारे में तो बात करूंगा ना। या रविंद्र। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, अपने ये बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड वाला, उससे एक और सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट भी आएगा सर, विच इज अबाउट एनबीएफसीज। एनबीएफसीज कैपिटल मार्केट से जो बोरो करते हैं उसमें म्यूचुअल फंड का भी काफी हाथ है, डेट म्यूचुअल फंड। तो लोअर टियर्ड एनबीएफसी दे विल फाइंड प्रॉब्लम। उसकी वजह से आज एनबीएफसी को हिट दिख भी रहा था। एक्चुअली मैंने दोपहर को ना समर्थ भाई को मैसेज भी किया था कि अरे मेरे को करने का था ना। अरे नहीं सर, वो इसका था। मैंने देखा था मैसेज देखा था, बट उसमें एक ये जो आपने बोला ना जो एनबीएफसी का, वही मैं देख रहा था, बट थोड़ा डेटा बाकी था, इसलिए आई वाज जस्ट कैलकुलेटिंग द होल थिंग एंड was calling you at that time only, but थोड़ा काम आ गया, ये रह गया था। अच्छा सर, समर्थ भाई आपको एनबीएफसी का मैसेज किसी और ने भेजा होगा, मैंने तो खाली वो जीक्यूजी वाला भेजा था आपको, कि मेरे को लगता है कुछ तो लिंक आपका ट्वीट जो था ना उसके ऊपर की अच्छा बात कर रहे हैं। ट्वीट, हाँ ट्वीट तो कुछ भी भेजा होगा, चलो ना आगे बात करो। हाँ सर, तो एक तो ये भी है कि whatever has been done by GQG just few days before this, it's very fishy। दूसरा चीज ये भी है कि इवन इनफैक्ट इन्होंने ना 2 महीने निकाल दिए बजट के अनाउंसमेंट के बाद, क्योंकि अगर 2 महीने देते ना, पीपल वुड हैव मूव्ड फंड फ्रॉम डेट म्यूचुअल फंड टू द बैंक। सॉरी रिवर्स सॉरी, कि जितना 1 अप्रैल से पहले होगा उसमें टैक्स इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता, तो इन्होंने वो भी विंडो नहीं दिया। 2 महीने का के डिस्कशन टाइम में ये कुछ मूव कर पाए इन्वेस्टर्स। आपने टाटा पावर की जो बात की, मैंने अभी अपने मैसेजेस में भी डाला अपने ये स्पेस वाला में। ये पूरी स्टोरी सर, जो मैं बार बार याद है 2-3-4 महीने से वो कोल के बारे में बोलता हूँ, पूरा टाटा पावर का भी स्टोरी कोल से ही लिंक्ड है। कोल का प्राइसेस बढ़ा इंटरनेशनली, तो इंडिया में इमरजेंसी 11 लागू हुआ फ्रॉम सीईआरसी। उसके वजह से डिस्कॉम कंपल्सरीली विल बाई पावर, इनफैक्ट फ्रॉम मुद्रा वाला जो अपना पावर प्लांट था टाटा का, जहाँ पे खर्चा 6 रुपये पड़ता है। अदरवाइज पावर के कॉस्ट एक्सचेंजेस में 3.5-4 रुपये चल रहे हैं आज के दिन में। सो वो मुद्रा री रेट हो जाता है और उनको इंडोनेशिया में जो उनके कोल माइंस है उसका फायदा होता है। वंस इंटरनेशनली कोल कम बैक टू इट्स लेवल, जब अपने बात करते थे 400 भी था, आज के दिन इंटरनेशनली 6000 वाले का कुछ 180 है। सर इस समर के बाद वंस इट मूव्स बैक टू 100-150, ये पूरी कहानी वापस से डाई डाउन हो जाएगी टाटा पावर की। कोई भी यूटिलिटी एसेट सिंगल डिजिट आरओसी करता है, वो 2 बुक वैल्यू पे चल ही नहीं सकता। 1.25 वाला उसका फेयर रेंज है, और टाटा पावर अभी 2 से ऊपर ही है। तो यही है। थैंक यू। बोलिए, और कौन है? जीत भाई बोलिए ना। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो समर्थ सर, नमस्कार। नमस्कार समर्थ भाई, शरद सर, अभिषेक भाई। चलिए सर। कुछ नहीं सर, मैं तो शॉर्ट करके ही बैठा हूँ काफी दिन से, आज से तो नहीं, बहुत दिन हमें इंटरेस्ट नहीं है आपने क्या किया। हाँ सर, मार्केट का मैं ये बोल रहा था सर, ये अभी मैं जैसे देख रहा हूँ, अभी लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए थे तो उतने अच्छे तो नहीं थे। अभी जो अगले क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे वो और खराब आएंगे। जीत भाई किधर था इतना दिन भाई? सर मैं थोड़ा बिजी था, आता था स्पेस पे पर स्पीकर पे नहीं आता था सर।
तो सर वही है कि मतलब इस पे अभी रिजल्ट जो आने वाले हैं नेक्स्ट क्वार्टर के, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी के भी रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। सारे रिजल्ट गड़बड़ी आएंगे और आईटी के नंबर अच्छे आएंगे नहीं। बैंक के भी जो इनका जो मार्जिन बढ़ रहा था बिकॉज ऑफ एफडी का रेट कम था और ये होम लोन का इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया था या कार लोन वगैरह का, तो वो डिफरेंशियल भी अब धीरे 1 साल हो गया वो कम हो चुका है। तो इस बार पिछली बार जैसे अच्छे नंबर तो नहीं आने वाले इनके। तो बैंक की भी अच्छी खासी, वो बैंक इसीलिए गिरना शुरू भी हो गया उसका मतलब उनको मार्केट तो एडवांस में चलता है ना एज पर, तो एडवांस में उनको पता है नंबर खराब आएगा तो गिरा रहा है। और बाकी आपके जो कंज्यूमर हैं उनके अब सेल्स वेल्स सब डाउन है। प्राइस जब बढ़ा हुआ है सबका, आटा चावल दाल तो मतलब जब 650 रुपए का 10 किलो मिलने लगा तो फिर आप समझ लो बाकी चीज के लिए क्या पैसा बचेगा लोगों के पास। जब पैसा नहीं है लोगों के पास तो मार्केट कैसे बढ़ेगा? पैसा हो हाथ में तब तो थोड़ा और मार्केट में डाले। अभी ठीक है जिनके पास पुरानी सेविंग थी चल रहा था, अभी 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 म्यूचुअल फंड लिया, एसआईपी लिया, ये लिया वो लिया। अभी क्या है, होम लोन 10% हो गया है। मान लीजिए किसी ने मार्केट में पैसा डाला हुआ था 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए, अभी उसको घर खरीदने के जाने का है सपोज, तो होम लोन जाके लेगा या मार्केट से 15 लाख रुपया निकाल के डाल देगा? इधर तो कुछ मिल रहा है उधर डाल देगा। तो इस तरह से चल रहा है। अब ये धीरे एक दिन में तो गिरता नहीं है बाजार, धीरे धीरे गिरता है तो धीरे धीरे गिर रहा है। मैं खुद चाहता हूँ ये धीरे धीरे ही गिरे, क्यों क्रैश हो भाई? क्रैश नहीं चाहिए हमको, धीरे धीरे गिरेगा पैसा निकलता जाएगा, लोग नीचे जो जिनके पास थोड़ा बहुत रहेगा बाई करते रहेंगे और जिनको चाहिए वो निकाल के जाएंगे। लॉस में बुक करके सब जाना है सबको लास्ट में। Okay, Jit bhai, thank you very much. Now SAC, who's this? शशि सचिन कुमार। सचिन सचिन बोलिए। गुड इवनिंग शरद सर, गुड इवनिंग उमर भाई, अभिषेक भाई। तो मार्केट की क्लोजिंग तो आज बहुत गंदी आई है। ये अपना वीकली मैं देख रहा था चार्ट, पिछले 35 हफ्ते का लोएस्ट क्लोज दिया। तो 35 हफ्ते के मतलब इसका मतलब कि 35 हफ्ते में जिसने भी माल खरीदा दे ऑल आर अंडर वाटर। सो मेरे हिसाब से तो ये जो 16,850 का सपोर्ट 2 बार ले चुका है निफ्टी, तो गैप डाउन से टूटना चाहिए। बिकॉज लाइव मार्केट में टूटेगा तो सब बंदर चढ़ जाएंगे शॉर्ट करने के लिए। और 16,650 ये आवाज बंद हो गया क्या इसका? सचिन भाई म्यूट हो गए आप। हाँ बोल। सचिन भाई चलो। हाँ सर, अभी ऑडिबल है? यस यस ऑडिबल है। So I was saying that although my targets are 14,500, but we have to eat the pizza slice by slice, as Surendra says. So 16,650 is my initial target, which is a gap on the daily chart. So it should come next week. और मोस्टली हमने देखा होगा कि मार्केट में जो फॉल आता है that comes after 21st 22nd in the last week mostly. So that's what I feel that this week the fall should be very fast. Yes. अच्छा सचिन भाई हो आप? कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताओ। यार ये निफ्टी विफ्टी छोड़ना, क्या आगे क्या लगता है वो बोलना। ये सब में क्या मतलब है? 100 पॉइंट आ जाएगा कि नहीं आएगा, क्या फर्क पड़ जाता है? कोई ढासू आइटम बताओ। तो धांसू आइटम तो आरबीएल बंधन बैंक है शॉर्ट करने के लिए। हाँ आरबीएल और बंधन बैंक है शॉर्ट करने के लिए धांसू आइटम तो। हाँ ऐसा कुछ बोलो ना तो लोगों को फायदा होगा। ये निफ्टी लेवल बोल के एक्चुअली बोलूं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, शायद आप और 2-3 जन, जी बाकी कोई नहीं खेलता हो। नहीं सर, खेलते सब है, बताता कोई नहीं। हाँ भाई मेरे को तो 50% से ज्यादा खेलते होंगे, बताता कोई नहीं। अच्छा ऐसा है क्या? सर उसमें लिक्विडिटी मतलब लिक्विडिटी है ना, और मतलब
अगर सही टाइम पे पकड़े तो इंट्राडे भी अच्छा मूव मिल जाता है। तुम कल फोन मारो ना मेरे को। श्योर सर, श्योर। I am Narendra Verma. गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ बोलिए भाई, बोलिए, यू आर ऑडिबल। सर मेरे को एक चीज कहनी थी कि सर इस ग्रुप में न्यूज चैनल से अच्छा नॉलेज मिलता है, स्पेशली शरद सर एंड सर्वेंट सर। We can't hear you. नहीं ट्विटर अपडेट करो। सर ये बोल रहे हैं कि हम आपको प्यार बहुत करते हैं, आपकी स्पेसेस में टीवी से भी अच्छा ज्ञान मिलता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो पैसा दो हमको। हेलो। हाँ बोल बेटा। तो सर आप उनमें आ जाएंगे, पेड कोर्सेज वालों में। एक दिन में 1 करोड़ कमा लीजिए और पेड कोर्सेज ले लीजिए। एंड यू आर नॉट वन ऑफ देम। अरे यार कोई देता नहीं है, नहीं तो मैं तो छुप के पकड़ लूं। अरे नहीं सर, पैसा मैं किसको देख रहा प्यारा हूँ नहीं सर, है। लोग लॉस रिकवरी का प्लान कोर्स बेच रहे हैं सर लाखों में टेलीग्राम पे। देखो भाई साहब, कुछ मछलियां तालाब में खराब होती हैं, उसके लिए आप सारी मछलियों को खराब नहीं बोल सकते। कुछ बहुत अच्छे लोग भी हैं जो आप और नहीं आप सुनिए मेरी बात, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो कुछ अच्छा भी पढ़ाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल और यहाँ सब मुझे मालूम है 90% लोग फ्रॉड हैं, लेकिन बाजार में 10% अच्छे लोग हैं जो अच्छे कोर्सेज और अच्छे कॉल सर्विसेज भी चलाते हैं। बाकी सर तो 18,000 जाएगा, यही दिस इज द राइट टाइम टू बाई, दिस इज राइट टाइम टू बाई चल रहा है। अरे नरेंद्र भाई, ये ना सर का एक सर्विस है, पेड सर्विस, टेलीग्राम चैनल खोल के रखा है और उसका चार्जेस है 1 लाख रुपीज पर डे। If you can afford it, you can come. मैं तो फ्री में उठा रहा हूँ सारे लोग सबके लिए। नहीं, 1 लाख रुपीज पर डे। If you can afford it, you can come. मैं मजाक कर रहा है। चल भाई चल। भरत भाई बोलो। हेलो सर, भाविक पटेल। हो जा रही है। भाविक पटेल बोलो ना। गुड इवनिंग सर। भाविक भाई एक मिनट। देखिए बहुत सारे स्पीकर्स हैं, बहुत सारे लोग लिसनर्स यहाँ पे होंगे जिनको आवाजें क्लियर नहीं आ रही हैं। वो लोग प्लीज, ट्विटर में पहले ग्लिच था, वो लोग सब लोग अपना ऐप अपडेट करें एक बार, सो दैट यू आर एबल टू पार्टिसिपेट प्रॉपर्ली इन द ग्रुप। सो आप एक बार सब लोग अपना ट्विटर अपडेट करिए प्लीज। हेलो। हाँ बोलिए। सर मैं एक दो चीज सर बताना चाहता था। जैसे एमएनसी की आप बात कर रहे थे, पहले भी आपके बहुत सारे शेयर थे। मैं बेसिकली एबॉट में हूँ, एबॉट इंडिया लिमिटेड में 2006-07 से। अभी सर फार्मा मार्केट का सर ये हाल है कि एक टाइम था जब फार्मा मार्केट के प्रोडक्ट से लेके सब चीजें मोनोपोली थी ये सब, लेकिन सर पिछले 4-5 साल से हमने देखा है कि कई सारी कंपनी जो लिस्टेड नहीं है मार्केट में, इंडियन मार्केट में, वो सब कंपनियां ले ऑफ बहुत कर रही है, इंक्लूडिंग सनोफी, एस्ट्राजेनेका, जैसे ये सब मार्केट में लिस्टेड है। वो हाई से अभी 30% में भी 40% डाउन है। एबट का भी अभी यही हाल है, 23-24 हजार है, अभी 15 हजार गया था बीच में, 21-22 हजार आया। तो दूसरी सेक्टर का एमएनसी का तो पता नहीं था, लेकिन फार्मा मार्केट में एमएनसी कंपनी जितनी भी रही है, जैसे एलाई लिली करके थी, बहुत सारी है, जो ब्रिस्टल एंड मेयर थी, जो लिस्टेड भी नहीं। और ब्रॉड सेक्टर में सर फार्मा मार्केट के बारे में सर आपका कुछ कहना? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है सर? आ रही है। हाँ, तो सर ये सब ओवरऑल सर मार्केट के बारे में, फार्मा मार्केट के बारे में, फार्मा सेक्टर्स पर्टिकुलर एमएनसी की बात है। इतना आइडिया नहीं है यार। एमएनसी अच्छा है, डिविडेंड देता है, बस बहुत हो गया।
हाँ सर, वो है डिविडेंड देता है बीच बीच में, लेकिन जो एप्रिसिएशन जैसा जो है अरे पर्टिकुलर इंडियन थोड़ा कंपनी में तो अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता है, छोड़ो ना यार। अभी भी नहीं है सर, यानी मैं वही कह रहा हूँ, बहुत सारे ले ऑफ हो रहे हैं सर, जो सालों से कंपनी में काम कर रहे थे, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इंडियन मार्केट कॉम्पिटिटिव इतना हो गया है कि अभी हमको सस्टेनेबिलिटी भी हमारी नहीं रही, एम्प्लॉयज को जो सैलरी ऊंचा वो लोग दे रहे हैं सर। तो अभी हालत ये अभी पर्टिकुलर फार्मा का भी है, डोमेस्टिक में बात कर रहा हूँ मैं, वो जो एक्सपोर्ट बल्क मार्केट एक्सपोर्ट कर रहा है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव लेवल में ये लोग टिक नहीं पा रहे हैं सर। तो अभी पिछले हफ्ते सर सनोफी ने 100 टॉप मैनेजमेंट के जो थे, एरिया सेल्स मैनेजर, रीजनल मैनेजर, उनका ले ऑफ किया। अभी 15-20 दिन पहले एस्ट्राजेनेका ने कुछ 70 लोगों को ले ऑफ किया सर, बुला करके सीधा नोटिस दे दे। एबट ने सर 75 लोगों को अभी ले ऑफ किया 2 महीने में, जनवरी में। तो ये सिलसिला पिछले सर 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कोविड के बाद कि कोई भी एमएनसी पर्टिकुलर बात कर रहा है, इतना नहीं हो रहा है कि ग्रोइंग के हिसाब से और ग्रोथ के हिसाब से, दोनों के हिसाब से, और अपने स्टॉक मार्केट प्राइस के हिसाब से भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जय 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 हिंद। जय हिंद, अनम्यूट कीजिए सर। चल छो सासी कुमार। Sorry, by mistake, it's got requested. Nothing from my end. अरे बोलो, अभी आए हो तो बोल लो कुछ। Sir, I am been following your space from so many days. So I got a lot of input and insights. So which I am learning a lot from this space. Thanks a lot for giving such a knowledgeable information. Okay, thank you. Yes, RIS. RIS ऋषि। हाँ जी नमस्कार सर। ये नमस्कार शरद सर, आपसे एक सवाल था, ये बड़ा पैसा कैसे बनेगा? 100-200 करोड़ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग करके बनेगा या शॉर्ट करके बनेगा सर? सर मैं बताओ। लॉन्ग करोगे तो आपके पैसे नहीं बनेंगे, शायद आपके बच्चे या उनके पैसे बन जाएंगे। नहीं, मैं इसमें बहुत जरूरी चीज ये भी है समझने का कि स्टार्टिंग कैपिटल कितना है। स्टार्टिंग कैपिटल 100 करोड़ बनाने के लिए स्टार्टिंग कैप सॉरी 5 करोड़ से 5 करोड़ से 100 करोड़ बनाना है 20 गुना। हाँ तो टाइम लगेगा बॉस, ऐसा नहीं है नहीं बनता है, लेकिन टाइम लगेगा। नहीं मैं बोलता थोड़ा हूँ, सा एक मतलब वो शरद सर एक रास्ता दिखाइए, मतलब आपका आप सुना है मैंने, आप 200-400 करोड़ हो सकता है और भी ज्यादा हो, तो मतलब ये कैसे पहुंचे इस लेवल पे सर? देखिए वो सब मैं क्या कौन सा लेवल पे हूँ, 0 पे हूँ या हीरो पे, वो छोड़ दीजिए। आपके पास में 5 करोड़ है तो आसानी से 2 साल में 50-60 करोड़ रुपया बन सकता है। हाँ सर। और ट्रेडिंग में जी ठीक है सर, तो वो थोड़ा सा रोड मैप इसका अगर बता सके कैसे क्या करना हो थोड़ा सा। तो आपको स्पेसिफिक बता दूं? नहीं सर, मिल के बताइए, हमारे यहाँ बॉम्बे, आप हुक्म करिए। ठीक है सर, देखते हैं। ठीक है सर, मैं बॉम्बे आ रहा हूँ। थैंक यू सर। अरे नहीं भाई, नहीं मेरा व्हाट्सएप नंबर है, फोन मार दीजिए। मैं फोन मारता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। वो मेरा आदमी चिल्लाता है कितनी बार चाय बनाऊं सबके लिए। yes. तरुण भाई बोलिए। तरुण भाई, मिस्टर डायमंड।
Hi, good evening. Good evening. How are you? अरे भाई गुड इवनिंग. हाँ जी. तो बैंक्स का तो वैसे ही पता है, इंटरनेशनली है तो इफेक्ट तो इंडिया पे भी आएगा ही. दैट इज बेसिक. And as I told Fact Finder almost few weeks back that banks are the safest shot. मतलब उससे भी ज्यादा सेफ चाहिए तो बाकी फिर जो शरद सर बेचते हैं अपना दीपक और आरती और डिक्सन वो उड़ा दो. But I think those who still think that this is a bull market, I think they're doing some सस्ता क्वालिटी का ड्रग्स. चांस ही नहीं है कि ऊपर जाए. मतलब शॉर्ट कवरिंग आ जाए तो ठीक है, वो भी अब मतलब लग ही नहीं रहा कि स्ट्रेंथ ही नहीं है दूर दूर तक. So I reiterate my view that we are heading to June lows and lower, much lower. तो एक बार 12,000 आता है तो फिर निकालते हैं अगला टारगेट. Tarun, I हाँ can जी. interrupt for a while. या प्लीज डू. ये जो आपने बोला ना कि कोई डेप्थ नहीं है ये, मेरा मानना ये है कि ये जो 1.25 साल तक खींच के बुल मार्केट चला है ना, उसका ये नतीजा है. अच्छे से गिरने देते तो ऐसा नहीं होता था, बट बेवकूफ लोग है, इंडेक्स ऊपर ही रखा. अब संभालो ताकत है तो. अननेसेसरी बाजार को इतना खींच के रखा, अब भुगतना पड़ेगा. यस करूं. So I agree with you on this. If we look at world indices, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, everyone did touch their pre-COVID highs in some point during the last year, whereas ours did not. And उसी का ही भुगत रहे हैं. एंड अब ये सीधा अगर रुकेगा तो वहीं रुकेगा. उससे पहले तो मुझे कोई बाउंस नहीं दिख रहा. मतलब प्रॉपर मे बी WMA 200 से कुछ आ सकता है तो आ सकता है, बट आई थिंक 12,400 ही आ रहा है अगर इंडेक्स की बात करें. और बाकी अगर स्टॉक्स की बात करें तो दीपक नाइट्रेट आई एम शॉर्ट सिंस सम टाइम. आई एम जस्ट रोलिंग ओवर. सो देखते हैं कहाँ तक जाता है. शरद सर, योर व्यू ऑन दीपक नाइट्रेट प्लीज. डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट? डीलिस्टेड. चलो बढ़िया है. मतलब बेंटले मेरी दीपक ही निकालेगा इस बार. मेरे को भी गिफ्ट कर देना रोल्स रॉयस साथ में. डन भाई. दिलेरी तो पूरी है मुझ में, आपको पता ही है. चलिए, अभी कौन है? हर हरमीत. हेलो. हाय सर. हाय समर सर. हाय सरविंदर सर. सर ये जो आज का स्पेस का जो हेडिंग है वो मार्केट्स के लिए है कि ओवरऑल कंट्री के डायरेक्शन के लिए है? just as a joke, I'm sorry, but the point is that similarly लग रहा है. Anyways, the way I'm looking at a lot of things, and obviously it is for a long time now, जिसको भी अगर यहाँ पे कोई भी people are thinking that there's going to be some hope in the future or there is a light at the end of the tunnel, what I can say internationally, at least looking at what the Fed has been doing for the last 12 years, उतना तो मैं बोल सकता हूँ कि with the kind of rate increases that they have done, it's just getting into the system right now. ये जो अभी दिख रहा है, these are the first initial rate hikes के effects that are actually taking place currently. इसके बाद so to speak the entire pig has to go through the python. अभी एक सांप ने कुछ खाया है तो उसको हजम होने में टाइम लगने वाला है. So there's going to be a lot of impact coming forward. The reflection of their changes have just being seen right now in the
But I've always been an optimist, so I just दो सेपरेट क्वेश्चन है सर. एक शरद सर आपसे और एक सर्वेंद्र सर आपसे. शरद सर, एक कहीं ना कहीं तो दिस विल ऑल गेट ओवर, लाइक वी से ऑल थिंग्स कम टू एन एंड. तो एक क्या आपके हिसाब से एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो क्या एक इंसाइट होगा या वो एक क्या टर्न होगा व्हेन यू थिंक थिंग्स आर नाउ बेटर? एंड सर्वेंद्र सर, फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ डू यू थिंक what should we look for when we understand how the markets are turning around? मैं बोल देता हूँ. Those are It's my too questions. early to predict the trend. Your question is Okay. misplaced. Is Okay. too Okay. much time. Then we'll revisit it. And All right. Sarvendra, All right. your answer. शरद जी, इन्होंने टेक्निकल सेटअप पूछा कि भाई टेक्निकल सेटअप में क्या देखना चाहिए. जी सर. तो जब आपको सबसे पहले जब आप टेक्निकल सेटअप देखते हैं तो आपको पहले डिसाइड करना है कि भाई आपका टाइम फ्रेम क्या है, कि भाई आप कितने टाइम के लिए कुछ व्यू निकालना चाहते हैं. सो वट एवर, सपोज इट 6 months 12 months. तो अगर आप 6 महीना देखना चाहते हैं तो आप वीकली चार्ट खोलेंगे तो वहां से भी आपको एक डिसेंट फ्लेवर मिल जाएगा 6 महीने का. आपको अगर 12 महीने का देखना है तो आपको मंथली सेटअप्स देखने पड़ेंगे. आपको 12 महीने से ज्यादा देखना है तो आपको क्वार्टरली और ईयरली भी देखना पड़ सकता है. So it purely depends on your time frame as to what you are trying to do, and charts will help you in all the time frames. See, ये एक लोगों को भ्रम है कि खाली इंट्राडे और शॉर्ट टर्म चार्ट ट्रेडिंग होती है और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल होती है. दोनों की अपनी जगह है. अगर आप अच्छे से चार्ट्स यूज करते हैं तो आप यू कैन इजीली गो 6 to 8 years ahead on the charts only. One prime example I can give you, जो मेरा अभी का व्यू है जो चार्ट पे, कि भाई अगर 40 साल का बेयर मार्केट यूएस बॉन्ड यील्ड में कटा है तो 8 साल तक उसके असर रहेंगे. अब वो असर कैसे रहेंगे, कितने रहेंगे, वो हम देखेंगे. बट अगर मेरा 8 साल का पिज्जा है ना तो उसकी मैं एक स्लाइस 2 साल की खाऊंगा, और क्योंकि पिज्जा बहुत बड़ा है इसलिए 2 साल की स्लाइस को भी 3 6 महीने के लिए 4 स्लाइस करके खाऊंगा बस. इसके अलावा और कोई दूसरा, देयर इज नो रॉकेट साइंस एंड देयर इज नो 100% होली ग्रेल जो आपको हर चीज बता देगी. बट जस्ट बीइंग लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल विद चार्ट्स कैन टेक यू माइल्स अहेड. तो आप अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करिए, अपनी स्लाइस डिसाइड करिए और उसके बीच में खेलते रहिए. That is all I can tell anyone who wants to do either intraday and positional and 6 months and 1 year and 2 years and 6 years and 8 years. But मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. 40 साल का चार्ट अगर आप देख रहे हो तो 8 साल के तैयार होकर उसको देखो. 40 साल से अगर कुछ निचोड़ निकाल रहे हो, you should be able to try to get those results for next 8 years, 7 to 8 years. तो और 8 साल का एक बिजनेस साइकिल होता है. तो अगर इंडिया ने 1999 से 2023-24 तक 3 बड़े बिजनेस साइकिल कंप्लीट किए हैं 8 साल के, तो एक करेक्शन 3-4 साल का 8 साल का बन सकता है जो आज तक कभी दिखा नहीं है. सेंसेक्स में अभी तक 2 साल से ऊपर का कोई करेक्शन आया नहीं है 40 साल के इतिहास में. जो भी सेंसेक्स का जितना इतिहास है 43-44 इयर्स का, उसमें अभी तक 2 साल के ऊपर का कोई भी करेक्शन इंडिया में नहीं आया है. इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि नहीं आ सकता है. बिल्कुल आएगा, कभी ना कभी तो आएगा. और जितना देर में आएगा उतनी प्रोबेबिलिटी, पीपल हु कैन अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी साइंस इज कि जो चीज नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे जैसे वो चीज नहीं होती है उसकी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग विल कीप ऑन इंक्रीजिंग टिल द इवेंट वाज नॉट हैपनिंग. क्योंकि अगर 1 in 100 इवेंट है कि 4 साल का बेयर मार्केट आएगा तो 16 बेयर मार्केट तो ऑलरेडी निकल गए. तो योर नाउ द प्रोबेबिलिटी इज 1/86, सॉरी 1/84, जो पहले 1/100 थी. तो द मोर यू डिले अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, द मोर दैट प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस एवरी पासिंग डे. सो जैसे मैंने बोला 40 साल पहले अगर ऐसा था कि 4 साल का बेयर मार्केट नहीं आएगा 1/100, तो आज वो 12-11 बेयर मार्केट करने के बाद, 16 बेयर मार्केट करने के बाद वो प्रोबेबिलिटी 1/84 हो गई है कि वो एक ना एक दिन 4 साल का बेयर मार्केट आएगा, एंड सो ऑन. सो द प्रोबेबिलिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, I hope I've answered. Surendra ji, thanks for your answer. I have a quick question for you or anyone. I live in US और मेरे parents India में रहते हैं. तो I just want to know like what a beginner once who wants to start doing trading should go through or read through. Number two, is the strategy of investing in ETF in India like we do SIPs in mutual fund? If we do regular, because I cannot invest in Indian market, my mother does, and regular ETF every month or every bi-weekly
is it a good strategy for long term, or is there any triple leveraged ETF in India like we have TQQ here in US? Sorry, Nishanji. Just as a closing note, Suraj sir, sorry, just couple of things. Srini sir, I really love your comments as a former copywriter and an ECD. I wish I had met you 10 years back. And Fact Finder, we really missed listening to you. So it's glad to see you back. I'll sign off. Thank you. Sarvinder sir and Charan sir. Thank you so much. बोलिए, नाम बिना के आदमी बोलिए। नहीं, पहले तो मैं इनका एसआईपी वाला जो ईटीएफ की एसआईपी जो बोल रहे हैं, आई थिंक निशांत जी का सवाल था। तो हाँ जी। तो देखिए, जो एसआईपीज की आप बात कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा कि यू हैव टू आल्सो नो योर रिस्क प्रोफाइल। इफ यू आर अ वेरी पैसिव लो रिस्क काइंड ऑफ अ इन्वेस्टर, तो आप एक रेगुलर एसआईपी चालू रखेंगे। बट इफ यू कैन ऐड सम मसाला टू दैट एंड यू कैन टाइम इट लिटिल बिट, तो आप लमसम भी करेंगे। मतलब जब आपको लगेगा कि अब लेने का अच्छा टाइम है, वहां पे आप लमसम ज्यादा डालेंगे, और कहीं जहां आपको लगेगा कि थोड़ा बेचने का टाइम है, तो आप वहां पे एसआईपी एटलीस्ट बंद तो करेंगे। अगर आप रिडीम नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट एसआईपी आप बंद करेंगे। फॉर एज्यूम, लेट्स टेक दिस केस स्टडी ऑफ दिस लास्ट 3 मंथ्स। 3 महीने से बाजार गिर रहा है और हमने इसको पकड़ लिया, मतलब हमने उसको बोल दिया कि भाई अब तो ये फॉल्स ब्रेकआउट है और 4-5 महीने गिरेगा। वो 4-5 महीने आपको अपनी एसआईपी बंद करनी है। बंद मीन्स आपको एससिप का कंट्रीब्यूशन नहीं करना है, बट उस पैसे को आपको साइड में किसी रेकरिंग अकाउंट में रखना है, जहां से आप बाद में उसको एक साथ लमसम 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना एक साथ निकाल के आप लोअर लेवल पे उसको इन्वेस्ट करेंगे। सो राइट नाउ यू हैव टू स्टॉल योर एसआईपी इन द सेंस दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग द मनी बट इनटू अ रेकरिंग अकाउंट व्हिच इज नॉट गेटिंग इन्वेस्टेड, बट इट्स अ कैश अकाउंट। एफडी है या शॉर्ट टर्म एफडी है या जो भी है, और आप जब आपका दिल करे 5-6 महीने बाद, जहां आपको लगे कि नाउ थिंग्स आर रीजनेबल एंड करेक्शन एक आ चुका है, 4 महीने बीत चुके हैं या 5 महीने बीत चुके हैं, तो वो 5 महीने का पैसा एक साथ निकाल के उस रेकरिंग अकाउंट में से आप उसको डालेंगे। सो दिस इफ यू कैन डू, देन दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। बाकी अगर आप बिल्कुल पैसिव इन्वेस्टर हैं, तो आप हर महीने एसआईपी जा रही है तो डालिए, बट कहीं ना कहीं तो एक बार लाइफ में कॉल लेना पड़ता है कि भाई मुझे अब पैसा और नहीं डालना है। शायद वो वाला टाइम है। 24 साल के बाद इंडिया में वो टाइम है कि थोड़ा पैसा रोक के डालिए, मत डालिए एसआईपी, अभी उसको साइड रख दीजिए। नहीं निशांत भाई, there are plenty of beautiful shares, you can accumulate them। ये ETF BTF वो छोड़ दो, अच्छे शेयर लो और भूल जाओ। और सर शरद भाई, मैं क्या बोल रहा था, वो जो ब्यूटीफुल शेयर्स है ना, उनके लिए भी ये लागू होता है सर, कि 5-6 महीना तसल्ली कर लो, वो ब्यूटीफुल शेयर भी 10%, 20% नीचे मिल जाएगा। सर मेरी पर्सनल क्या पीछे एक्सपीरियंस रहा, मैं आपको बताता हूँ। मैं एसआईपी लगा रहा था, पिछले 10 साल से एसआईपी चल रही थी और मैंने उसको बंद नहीं किया। मार्केट जब नीचे जाती थी तो मुझे वही यूनिट सस्ते प्राइस पे मिलते थे, जैसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जिसको हम कहते हैं। मेरी यूनिट्स की मार्केट नीचे जाते में भी वही हो रही थी, और जब मार्केट ऊपर जाती थी आई वाज बाइंग इट कंसिस्टेंटली, तो मुझे उसके रिजल्ट अच्छे मिले। बट कमिंग टू द शेयर्स, नाउ द थिंग इज दिस कि इंडिया के अंदर जो अच्छे शेयर की आइडेंटिफिकेशन इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अ लेमैन लाइक मी। Yeah, got it. Can I say something over here? Yeah. Hello. Yeah. Hi, Ji. Hi, Samarth. Hi, Abhishek. Hi, Sarvendra. Hi, Ravi. Hi, D. So you are back from your holidays, or you are still holidaying? Good evening, Fact Finder. Good evening, guys. Okay, I just want to add something to Nishant. Nishant, you're based in the US. Do you transfer money from US to India? Is that what you're effectively doing? No. I don't transfer money from US to India. My mother is having some savings there. We have our business in India also, and because I am a non-resident Indian, I don't do anything in India. But my mother is doing that in that case in India. Okay. My second question is, are you? I don't know what your background of the family is, but do you have other siblings who are in India? Or eventually, you're going to be in the US. No, my siblings are in my sibling. One sister is in India. Okay. But I am a resident here. Okay. No, the reason why I'm telling you all of this, I'm asking you these questions, is because if I don't know if you guys tracked. See, one thing is very clear. Okay,
this government wants to increase tax at every level, right? And make things more expensive, right, in terms of taxation. And this is the important thing. Uh, about a month ago, and this guy Nilesh Shah of Kotak Mutual Fund, he's the CEO of Kotak Mutual Fund, and he's a part of the PM's Economic Advisory Council. So he's got a lot of sway with what government policy is there at the financial, services level, and I'm fairly certain that he would have been aware of this change that is coming through. He suggested in a Twitter, quite blatantly, he said, you know what? We are losing a lot of money from India because of these students who are leaving India and going abroad. And then eventually those students go and stay abroad, get a green card, become a citizenship, and then basically take the money from India. And so we lose a lot of dollars. Now, what he's saying is that if India, remember, about 4 5 years ago, removed their dual citizenship, right? So now he's saying that if a person leaves India and eventually gives up Indian citizenship, they will have to pay a 30% tax on whatever wealth they have in India. Okay, so now this can happen anytime soon. It can happen next 1 year, 2 years, possibly. I don't know. And he was very adamant about it. He says that the US also has the same policy, but the difference that he didn't mention about the US is that US actually allows a dual citizenship. India does not allow a dual citizenship. So there is no reason why a US citizen would actually give up his US citizenship. It's very rare. So the point I'm trying to make is that if you have any of your assets in India, okay, you don't have much time to take it out, because if this law is implemented, remember there are two things. One, already starting July of this year, 2023, any money you transfer out of India under the LRS scheme will be taxed at 20%. So you would have already paid income tax on that money, but if you transfer it out, you'll pay another 20%. If what this guy Nilesh Shah is talking about, this will apply, it'll be almost like inheritance tax. You will have to pay 30% the moment you lose your citizenship of India on all your assets that are in your name. So just keep this in mind, that this is a very high possibility that will come through. Thanks for information fact, but being living, my family is in like they are here in US since long. My chacha taya. The thing is this: what you have said, like it is not about the once we. No, it is not about the even citizenship. If we are here more than 6 months and we have a residency visa, not a work permit, not a student visa, we come under the same purview. What you said, it is not like about citizenship. Number two, the government is definitely doing thing because they started doing this dividend tax thing on the dividends which we get in Indian stocks. Recently, they started taxing them. What we do is that we have a principle that what I learned from my elders ਕਿ वो मतलब पंजाबी च कहंदे ने कि जी इंडिया ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੰਡੀਆ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ हमने इधर उधर नहीं करना. So what I am talking here is that you are thanks for the information. Your information was very useful, but what we do is we have our Indian money, and that Indian money is invested by an Indian citizen in India. And nothing is like, my mother is, she's on the books, like she's the owner and she's, her return goes and everything goes. It's just me who sees online what's buying and what's selling is being done. For you, I very well agree on this thing, but India never had a dual citizenship. Like it was not abandoned 4 years ago. The OCI cards, what we have, we are in the purview of 30% tax deducted at source now also. If I have a FD in a NRE or NRO account in NRO account in India, and I am a non-resident, if I earn like let's say 10,000 interest, like 20,000 interest, whatever it is, 30% tax is deducted. But if you file a return, like you're filing return in India, like we do in US, like F bar, so there are certain tax things, but to get rid of all these complications, when you become a citizen here or a resident here, before that, like in my family, we transfer all assets, we do everything before we become a resident and all that to our immediate family members who are Indian citizens or Indian resident there. Tax fact. Yeah, thanks. Just one thing. There is a difference with what you're saying and I'm saying. I'm talking about what you're referring to is taxation on income. I'm referring to taxation on wealth.
There's a difference. So let's say if we have it, like we have an ancestral house in India, like my father, and then it comes to me, and anytime down the point, we sell that house in India and buy another house in India. So you mean that will also attract the taxes? No, I see at the moment it's not been announced, but let's say that I mean, my guess is that if you transfer the money out of India at that point of time as you do citizenship, then that's when this tax will might apply. But again, you know what? I do not know how the U.S. Inheritance tax works, but the way they are thinking about it is an inheritance tax concept. That's the way they're thinking about it. But again, as I said, this is just a suggestion. But this is, I take whatever the government says very seriously when it comes to taxations. They usually do things which are more draconian than what they say. So, No, I very well take your point, and I really appreciate that you suggested me, because we have a limit of 7 lakh rupees in a year that we can transfer from, I think so, India to here, and there is a limit of $250,000 which we can transfer from India to US without RBI approval. But you know what? India need those tax systems to be in place and bring more population under tax bracket, because 125 crore or 135 crore, and the tax paying population is just like 2% or 3%. What? So India definitely need those measures. What I feel. anyway, that's a long debate. I disagree with whatever you said, but Let it long go. debate. We'll not bring that up right now. Yeah. Who's next? Yeah, Ravi, you wanted to say something. So one thing, when we are discussing tax now, something will happen is on property. We were discussing on property. Only place where indexation benefit is still available for gains on property selling and buying. So maybe real estate lobby is very strong. That's why that. Hello. Oh, sorry. I was saying maybe the real estate lobby is strong. That's why that indexation benefit were not removed in this budget. But given this would be limited place where indexation benefit is applicable among the larger tax bracket for investors, I think they will plug this one very soon. So since we are discussing property, then this will also should be in the radar that whatever indexation benefit people enjoy on sale of property, it will go very soon, I guess. Hello, and also not only that, also the Section 54 benefit, the property gain which you can invest in REC PFC tax free bonds, that time will also be curtailed. Just a hunch, maybe after general election. Raviji, if host, I have a very quick question. If you can answer me now or on a DM, like the new DM, builders. you DM me. You DM me. Okay, fine. I will DM. Yeah, Thanks. because it's taking too much time. Mukund Soni. मुकुंद सोनी और कोई बोलो भाई Nishant. Sir, if I can just interject in the middle, thoda sa, I just wanted to understand, Fact Finder, your view on all the changes that have happened today in terms of what the government has announced for the debt mutual funds. If that's okay to ask, please. Sharad, should I speak? And before that, if somebody already shared their views on this, I'm happy to listen. अरे यार आज जो आया ना वो ठीक है यार वो दीपक शेनोय का स्पेस सुन लो ना सब पता इधर और कुछ बात करते हैं ना ये सब क्या है चेंजेस का So let me
Very quick, Sharadji. I think I try to listen to what Deepak says. According to him, there is not much of an impact. I disagree with that. And here is why I disagree. Because a large part of the NBFC. Okay, let me go back very quickly. 2018 July. I wrote out something to predict that there was going to be NBFC crisis. How was that a prediction based on? Simply because there was no inflow into domestic debt mutual funds. In FY18, debt mutual fund inflows was zero, while equity mutual fund inflows was $25 billion. Because of that, NBFCs, when they were growing very fast in FY19, they had a liquidity crisis, and that's what happened to ILFS and all the NBFCs like Divan Housing and all these guys went down. Now, the difference here is that NBFCs get a lot of funding from debt mutual funds. About 35% of the debt mutual funds, in my view, can get impacted. And if the economy is growing, NBFCs will grow. But if the debt mutual funds don't grow, and in fact, if it shrinks by say even 10%, then the NBFC's growth will be an issue, because NBFCs have to either borrow from mutual funds, from insurance companies, or for banks. Banks, they already up to their neck in terms of funding for NBFCs. NBFCs, in my view, the biggest problem is going to be Bajaj Finance, because he's a very large NBFC, and effectively the government has effectively said that if you want to do financing now, you will have to become a bank. That's what's going to force in Bajaj Finance to become a bank, in my view. So now, one very, very important thing that a lot of people don't realize: when I am a retail investor, if I put 1 rupee in a fixed deposit of a bank, out of that 1 rupee, 35% usually gets invested in GSECs or CRR. Another 15% gets given out to priority sector lending. 50% of that money is given to businesses to lend, which are profitable businesses. If the same 1 rupee, instead of putting in a bank fixed deposit, you put it into a mutual fund, that mutual fund gives that entire money either to a corporate directly or to a NBFC. If that money goes to an NBFC or a corporate, 100% of that money is utilized. So whatever money goes to a mutual fund is 100% utilized for the good of profitable businesses. While in case of a bank, only 50% is utilized. So this is called a credit contraction. So it's actually very, very bad to discourage money going to debt mutual funds. I think, in my view, this is something that nobody's talking about, and this is a negative for the system, because NBFCs do very important business. They give credit to businesses which are unable to get credit from banks. One more point, fact finder. The most heavy hit will come to very rate sensitive kind of NBFCs, which is like our housing finance companies, MSME lender and CV lender. Less impact would be on gold financer or microfinance, because borrowers there are not rate sensitive. But HFC, which is anyway struggling to compete with the bank in terms of lending rates, we were discussing before you joined that NBFC borrowing capacity will be curtailed because of this move. And my hunch is this move was announced 2 months after the budget, so that people can't move their fund from bank to mutual fund in that before 31st March. I think probably that was the reason it was announced so late. Sharadji, I'm done. I just wanted to share this. Sorry, you agree or you disagree? No, I agree. As I said, Sharadji, I'm done. I want to just share this view. Yeah. K. बोलिए K. Good evening. Good evening, Sharad Sirji. I had two questions. One is 31st of March, there is a deadline for people, the people's mutual fund accounts would be sort of frozen if they don't give nominees, etc. Does anybody have an idea how many people have really converted, and what is the kind of impact we'll see with the frozen
mutual fund accounts and its impact on the equity market? No, I don't think there will be any impact. I think deadline was extended till October, something September, October. Check it up. हेलो Sure, sir. Thank you. और कोई सवाल? सर एक सवाल और था, with all this taxation thing, is investment, direct equity investment in foreign markets, which some Indian citizens were doing or were getting as ESOPs from their companies, we were getting indexation benefits on that. Is that also gone now from 1st of April, or is it still there? If somebody has an idea. रविंद्र बोलो, मालूम है तेरे को? नहीं सर, फॉरेन का कुछ आइडिया नहीं. फैक्ट नहीं फाइंडर. मालूम है, sorry. Sorry, what is your question? So fact finder, what happens is a lot of Indians in IT sector and other place get direct equity into their foreign companies they work for, right? So it's a huge chunk of, like some of people, a lot of people I know in my company would have 2 to 3 years of their entire salary worth as equity in the foreign market. And that used to be treated like property and these debt funds, and we used to get indexation benefits. I got your question. This change doesn't affect them. Yeah. Thanks. Whatever was taxation was applies earlier, but this change doesn't accept them. And in any case, I don't think there was a indexation benefit for them. No, equity sale, we used to get indexation benefit, at least till last return, for sure. Okay, but this particular regulation doesn't affect that. Thanks a lot. Okay, bye. Ready? बोलो. सर मेरा क्वेश्चन है सर. बोलिए भाई. सर नमस्कार सर. आपका सर एक कीवर्ड जो आपने कुछ दिन पहले स्पेस में बोला था सर, वो सर मैंने नोट डाउन करके रखा है सर. बट अभी राइट नाउ टैक्सेशन की बातें चल रही है, तो इसके बाद सर मैं अपना कीवर्ड बोलना चाहता हूँ सर आपसे. बोलिए. आपने मेरे को लास्ट टाइम बोला था कि मैंने कुछ आपको एक्सप्लेन किया था, तो आपने बोला भाई तू एक काम कर, तू महीने में 1 ट्रेड या 2 ट्रेड डाल बस. सर 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ ट्रेड डालने का, आज पकड़ में आया है 70 ऊपर से. ट्राई कर रहा था, मैं आपको पूछा भी था सर, साइकोलॉजी कैसे इंटैक्ट रह सकता है इसमें, इस टाइप के मार्केट में जो चल रहा है, बिकॉज रिटेलर सबसे ज्यादा बीट कर जाता है वहीं पे. अरे मैं भी रिटेलर हूँ यार, तू मेरे को गाली क्यों देता? सर आप अपने आप को रिटेलर बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे सर अपने आप को सर? तो आप सोच लो, अपने सब रिटेलर है. राइट सर. तो सर आपका, सर आपने बोला था सर एक ही ट्रेड डाल, भाई डाला सर आज एक ट्रेड. तो सर इसमें अभी जो एनालिसिस बोल रहा है, जो अभी सारा डिस्कशन चल रहा है, तो ये सारा सर अभी इंडिकेट कर रहा है कि नीचे बेरिश साइड काफी ज्यादा लोगों का परसेप्शन है. बट सर क्या होगा, जो अभी सर ने पूछा था कि इन बिटवीन स्पेस में किसी भाई ने, कि सर वो क्या सर्कमस्टेंसेस है जिनके चलते ये हो सकता है ये इतना बेरिश है, कल को बड़ा गैप अप खुल जाए और वहां से एक पैनिक क्रिएट होके और ये अप मूव ले ले, स्लो एंड स्टडी. शार्पली तो नहीं लेगा, स्लो एंड स्टडी. तो सर वो साइकोलॉजी, मतलब जो बायर्स एंड सेलर्स का अभी दिख रहा है चार्ट में, वो कैसे इंडिकेट कर सकते हैं सर, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मालूम नहीं. तुमने क्या ट्रेड लिया, तेजी का मंदी का, हमको क्या मालूम? मद्दी का लिया सर, मद्दी का लिया सर. हाँ तो सो जाना फिर, काय को तेजी का बात करते हैं. ये जो रिवर्स आप लोग सोचते हो ना सर, कि आपने मंदी का सौदा किया और तेजी का वो सोचते हो, 100% आप हार जाओगे, मैं लिख के देता हूँ. यू आर नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट ऑफ योरसेल्फ, और जो आपका ट्रेड है वो वैसा ही सोचो. चलिए एनीवे. सर एक क्वेश्चन, डॉक्टर आशुतोष सर हैं यहाँ पे, अभी सर सुन रहे हैं. सर ने एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल एक मोटिवेशन दिया था सर कुछ स्पीच में.
आई होप सो सर। ये सर एक बार एक स्पीच देंगे जरूर सर, बुल्स एंड बियर्स का, कि कहाँ से शॉर्ट कवरिंग कैसे आता है करके। अरे ये जो स्पेस है ना सर, इतना प्राइमरी स्पेस भी नहीं है कि समझाया जाएगा कि बुल क्या है, बेर क्या है। ओके सर, या थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अरे चलिए भाई, कौन है? ज्ञानेंद्र। या सभी को नमस्कार, मेरा ज्ञानेंद्र अवस्थी बोल रहा हूँ। मैं तो स्टूडेंट हूँ मार्केट का। मैं आपके स्पेस पे आता हूँ, समर्थ भाई को, शरद भाई को, सर्वेंद्र भाई को सुनता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे तो बोलना नहीं था। आई डो नॉट नो कि मेरे को माइक क्यों दिया गया। मैं तो बच्चा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ज्ञानेंद्र जी, ये डीपी आपने रखा है, ऐसा क्यों रखा है? चलना भाई। हाँ, कौन चाहिए? राजकुमार, राजकुमार जी। हेलो। हाँ बोलिए सर। कैन यू हेयर मी ना? यस सर, यस सर। सर आई थिंक there is still more shocks from the US banking sector next month. Okay. Next month, and also from the European side also. So what I feel ki market will definitely touch the low of the 2020 Corona period. That's my view. Let's see what happens. Okay, thank you. Yeah. Yeah. बोलिए भाई, बोलिए ना विजय। हेलो सर। हाँ आकाश जी बोलिए। बोलिए बोलिए, यू आर ऑडिबल। थैंक यू एवरीवन। मुझे कुछ सवाल पूछने थे कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि जो गोल्ड के जो फ्यूचर्स होते हैं नॉर्मली वो डिलीवर लेने के लिए देते नहीं है, ऐसा कोई सीन है क्या? क्योंकि कभी मैंने सुना था कि कुछ दो भाई थे कुछ 1930s 40s के टाइम पे, कुछ वो डिलीवरी के लिए मांग रहे थे, कुछ वो दिक्कत हो गया था बैंकिंग सिस्टम में, कुछ गड़बड़ हो गया था, ऐसा कुछ हो रहा है? सच में है या बस ऐसा कोई फालतू का आर्टिकल था? सचमुच में था। मतलब सर ये मतलब है क्या? मतलब वो मतलब जो कहते हैं कि आप गोल्ड के फ्यूचर कभी फिजिकल डिलीवरी ले नहीं सकते, ये सच है? नहीं, वो सच नहीं है। मतलब सर हम लोग ले सकते हैं फिजिकल डिलीवरी अगर चाहे तो, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बाय कर रहे हैं तो ले सकते हैं? सर और एक सवाल था कि सर ये जो एनएससी का सर्वर है, दैट इज एज पर माय नॉलेज दैट इज हाईली एनक्रिप्टेड एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर अवेलेबल इन इंडिया, क्लोज टू सुपर कंप्यूटर यू कैन से, क्वांटम कोर वाला। लेकिन सर वो क्वांटम कोर होने के बाद भी जो पुट एंड कॉल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 3 मिनट्स डिले क्यों होता है? और कभी कभी 8 मिनट या 15 मिनट डिले क्यों आता है? वो तो इमीडिएटली विद इन सेकंड्स दिखाना चाहिए। अगले स्पेस में बताऊंगा पूछ के। अच्छा 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 सर, यार, और एक चीज बताइए प्लीज कि हाँ सर। मैं तेरे को पूछूं, खाना बनाना आता है? थोड़ा बहुत सर कर लेता हूँ। नहीं, तू मुत्तबल बना सकता है? नहीं सर। तो वैसे ही हम लोग भी सीधे साधे इंसान है। तू सुपर कंप्यूटर क्या पूछ रहा है हम लोग को यार? नहीं सर, वो सुपर कंप्यूटर प्रोवाइड मतलब डेटा प्रोवाइड किया जाता है कि बहुत फास्ट कैलकुलेशन करे और हाईली अरे एनक्रिप्टेड है। लेकिन थोड़ी मालूम है वो डिले क्यों होता है, क्या होता है? सर 3 मिनट बोलते हैं नहीं, कि हमें जानकारी नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। अच्छा 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 सर, मेरा बस यही डाउट था। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ तो
सर आप गिफ्ट सिटी अहमदाबाद को स्टडी करो पूरा। जो ये वो लोग ने इतने आज के जो अमेंडमेंट में फाइनेंस बिल में गिफ्ट सिटी अहमदाबाद को इतने फायदे दिए हुए हैं। उन लोगों को पी नोट्स, अगर आपने किसी ने भी सुना रहेगा, पी नोट्स जो इन्वेस्टमेंट होते थे उन्होंने पहले हटा दिया था। पूरा वो पी नोट्स का कॉन्सेप्ट गिफ्ट सिटी पे लगाया है। उनको पैसा एक्चुअली में FIS जाना है, अभी वो पैसा वो लोग को राउट करके गिफ्ट सिटी के थ्रू लाना है। तो पूरी जो ये लोग अमेंडमेंट्स कर रहे हैं टैक्सेशन का, जो भी है ये वो आगे पीछे जितना भी वो लोग टोटली गिफ्ट सिटी को प्रॉप अप करने के लिए कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो एंटिसिपेटिंग एन फॉल। और वो लोग पूरा मतलब मॉरिशियस और वो लोग के साथ गिफ्ट सिटी अहमदाबाद को compete करवाना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। वो उनको गिफ्ट सिटी का पूरा स्टडी करोगे, इतने फायदे दिए हैं गिफ्ट सिटी में। आप अगर सेटअप करके इन्वेस्टमेंट करो इंडिया में, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो एवरीथिंग इज डन, द अमेंडमेंट्स एंड एवरीथिंग टू प्रॉप अप अहमदाबाद गिफ्ट सिटी। सो प्लीज स्टडी एंड look into that. Fact finder, if you have anything regarding to say about gift city, you can share, like. Yeah, so I think in terms of capital gains tax, there is a huge benefit for operating out of Gift City. So it becomes it just makes so much sense. So I think a lot of large hedge funds they plan to operate out of Gift City. Short-term and long-term capital gains advantages operating for foreigners operating out of Gift City. And what do you say about the P notes? The P notes, like investment type, which is like opaque investment, that are also like somewhat like returning like through Gift City. Yeah, so Gift City has no income tax, no long-term capital gains, no short-term capital gains, no dividend distribution, and no minimum alternate tax for FPIs. That's like a huge advantage for them. So, will this Gift City be able to compete with Mauritius and all their tax havens? Yeah, Mauritius for sure. There's one more thing I want to just tell you. A lot of the big foreign banks like Merrill Lynch, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNP, and SocGen. So the biggest P note providers in our country are BNP and SocGen. And the reason why they are the biggest is because India has a taxation treaty with France. Now, with Gift City coming up, a lot of the foreign banks will set up their P notes or their entities based in Gift City, and this actually reduces the advantage of BNP Paribas and SocGen. So every single foreign broker will now open an entity in Gift City because the taxation, even a lot of large foreign institutional investors, long term, they'll also open up in Gift City because if you're paying zero tax, why won't you work in Gift City? Yeah. So for that traditional investment जो अभी तक किया हुआ है, they need to exit it, like, and then route it through Gift City. No, they might do incrementally from Gift City, no? Okay. चलिए मैं अहमदाबाद जाता हूँ. Even Warren Buffett. I will open an account in Gift City. But for that, Sharad ji, you'll have to have money coming in from abroad. Unless, maybe Warren Buffett, I think he told me that he is giving you $1 billion. No, not Warren Buffett. The underworld in Dubai is giving me money. Anyway, चलिए अभी कौन है? अनु, बोलिए ना, बोलिए. हाय सर, फर्स्ट ऑफ थैंक यू कि मेरे को ट्रेडिंग के बारे में तो इतना नॉलेज नहीं है, बट आई एम लिसनिंग टू यू एंड आई एम सिटिंग ऑन द कैश ड्यू टू यू ओनली. मेरे को दो चीज पूछना था सर. एक तो फर्स्ट वन जो अभी, हेलो, Can you speak loudly? Can you speak loudly? Keep the phone near your mouth. हेलो. हाँ बोलिए. हाँ बोलिए ना, बोलिए. था जो पूछना था मेरे को कि जब आरबीआई ने रेट बढ़ाया था 4 से 4.5 4.9 इंडिया में डाउनसाइड तो आने वाला है, लेकिन अभी कौन से गिर रहे हैं वो तो
फैक्टर्स की वजह से गिर रहे हैं। अभी जो हम वापस दें तो मार्केट को हमारे जून जुलाई के बाद फिर जो हमारी वजह से गिरना है। I think there were two people. आशीष आप बंद कीजिए। या विजय, बोलिए विजय। Vijendra, speak. हेलो सर, मेरी वॉइस आया? एक्चुअली सर मेरे को पूछना था, मैं तो टेक्निकल तो उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फर्स्टली थोड़ा बहुत आपसे सुन के कैश में बैठा हूँ। आई हैव गॉट ए नॉलेज कि जब आरबीआई ने 4.9 किया था 4.2, बट वी आर एक्सपेक्टिंग इन सितंबर दिस ईयर, लेकिन अभी हम डाउनफॉल फैक्टर्स की वजह से आ रहा है। लेकिन अभी आप देखोगे रियलिटी में कितने पाइप जो बढ़ रही है, पाइपलाइन जो घरों की, उसका इफेक्ट तो हमारे को जुलाई से दिखना स्टार्ट होगा। तो फिर क्या ज्यादा वो देख रहे हैं सर जुलाई में, जुलाई अगस्त? HF बंद करो। So what answer you want? सर मेरे को एक कंफर्मेशन चाहिए था कि Hello? अगर ये तो स्टार्ट है तो फिर बुरा क्या होने वाला है जुलाई और अगस्त में? अभी तो सोमवार का मालूम है। इतना लंबा मत सोचो यार। हाँ बोलिए। If you want to get the payment after 90 days, we will give you better rates. Still companies are giving this. आइडिया नहीं, आइडिया नहीं है। चलिए, कुछ समझ में नहीं आता है भाई। ओके, एनीवे, आमोश बोलिए। खुलो बोलिए। हाँ जी, तो मेरा थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। मैंने ये देखा है कि जैसे यूएस मार्केट में 1966 से 83 में जब इकोनॉमी भी बढ़ रही थी। अरे भाई हाथ जोड़ता हूँ, 2023 है, उतना दूर मत जा यार। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इंडिया ने कभी ऐसे नहीं देखा जैसे चाइना और यूएस में इकोनॉमी बढ़ती जा रही थी, लेकिन 8-10 साल तक रिटर्न नहीं बना इंडेक्स में। जैसे चाइना का भी 30 साल से जब इकोनॉमी बढ़ी, यहाँ पे बनेगा ना ऐसा सिचुएशन। तो कभी हुआ नहीं। 2030 तक नहीं, अभी होगा। 2030 तक कोई रिटर्न नहीं होगा। ऊपर नीचे होगा मार्केट, लेकिन आप कह रहे हो कि नेट जो है वो नेगेटिव रहेगा। या इतना हाई वैल्यूएशन रह ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। चाहे इकोनॉमी बढ़ती रहेगी, लेकिन इंडेक्स में रिटर्न नहीं बढ़ेगा। तुम कौन से देश का बात करते हो भाई? नहीं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ कि इंडिया में जैसे ग्रोथ 4.4% GDP growth. Are you serious? Do you understand what you are talking? नहीं, लेकिन ये भी तो बढ़ेगी ना आगे। मतलब अगर 4.2। अरे क्या नैरेटिव तुमको लिख के दिया है किसी ने? जब वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बोलता है वी आर स्केलिंग डाउन टू 0.24 GDP फोरकास्ट, और तुम हो कि जो बोलता है ऊपर जाएगा। तुम सच्चा कि वो इकोनॉमिक एडवाइजर सच्चा? नहीं, अब नीचे जाएगा वो तो मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन अगर 3-4 साल बाद नीचे जाते जाते ऊपर जाएगा। भाई साहब, इफ यू बिलीव इन योर एस्ट्रोलॉजी, गो अहेड। मैं तो सिर्फ आज का देखता हूँ, येस्टरडे का भी नहीं देखता हूँ और टुमारो का भी नहीं देखता हूँ। आज का, आज 4.4, मार्च 4.6, दैट्स आल्सो स्केलिंग डाउन। सर ये सब नैरेटिव है, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होता है।
जहाँ पे जो कंट्री में सिविल लिबर्टीज ना हो उधर यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, नो ग्रोथ. दैट्स माय पर्सनल व्यू. If I speak something against the government, they will create problems. Is it fair? Not fair. Is it good for you? Not good for you. But still you think it will go. I disagree with you. लेकिन वो तो चाइना में भी होता रहा है, लेकिन फिर भी मतलब China and India. Do you know the difference? नहीं, मतलब डिफरेंस तो है, लेकिन मतलब गवर्नमेंट डिसेंट से ग्रोथ का थोड़ा डिफरेंस जो है Sir, वो मतलब देखिए, I don't want to get into a debate with you or antagonize you, but what you are thinking is very rosy and it's not going to turn that way out. मैंने बहुत बाल सफेद किए हैं, नहीं होता है ऐसे भाई. और एक लास्ट बात बता दो, आज जो बजट पास हुआ ना, 45 लाख का बजट है. जीडीपी को अब वो भूल जाओ. लास्ट ईयर 40 करोड़ 40 लाख करोड़ था. इस टाइम 45 लाख करोड़. 45 लाख करोड़ में क्या होने का है भाई? इट्स नॉट इवन 1 ट्रिलियन यार. तुम क्या फेकम फाक में लगेला है? व्हाट आर यू टॉकिंग? इट्स ऑलमोस्ट 0.55 ट्रिलियन डॉलर्स और तुम बात करते हैं इतना बड़ा बड़ा बात. आज का अखबार में ये देख लो ना, बजट 45 लाख करोड़. फिर आपका आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा? अब बताओ मेरे को. लेकिन सर आप ये तो कह रहे हैं ना कि 2030 तक आपको जितना अभी बाजार पे बैठे हुए हैं हम 17,000, तो ये 17,000 का 17,000 ही रहेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा. क्योंकि अगर टाटा पावर 20 का पी पे चलता है इधर, जो कि 4-5 का पी चलना चाहिए, ऐसे ही सब कुछ ओवर वैल्यूड है अपने वहां भाई. आप समझो. और शेयर बाजार में ये 2 साल ही बाजार बढ़ा था, तो उसको सच मत मानिएगा. आपको लुभाया जा रहा है. डोंट रिडीम योर म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्ट मोर, डू SIP, लगे रहो. मिलते 3 महीने के बाद में यही स्पेस में आना तुम. सी, और एक बात बोलता हूँ. इफ यू आर अ shrewd investor, you will always think the negative first, then think the positive. खाली पॉजिटिव पॉजिटिव करोगे, हाथ में 2 रुपये वाला शेयर ही आ जाएगा. नहीं, मैं तो कॉन्ट्रा करता हूँ. जैसे लोग बेच रहे हैं तो खरीदना है तो बेचना है. तो उसमें सर, ये आप नहीं क्या है कि कर नहीं. आप क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ, ये स्पेस के लिए बराबर नहीं है बात. नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि या तो शॉर्ट होना ज्यादा फायदेमंद है या कॉन्ट्रा होना ज्यादा फायदेमंद है. मैं एक बात आपको समझाता हूँ और समझ लो. दोबारा क्वेश्चन मत करना. फ्यूचर्स मार्केट इज ओनली फॉर शॉर्टिंग. कौन सा भी फ्यूचर्स मार्केट, उतना अक्ल आप में आना ही चाहिए. फ्यूचर मार्केट में लॉन्ग किया मतलब आप मर गया वर्ल्ड वाइड. फ्यूचर्स को क्यों बोलते हैं? बिकॉज यू कैन शॉर्ट द फ्यूचर्स. और अगर आपको लॉन्ग जाना है तो देयर इज अ कैश मार्केट. यू एग्री और यू डोंट एग्री? आई एग्री, नाराज मतलब हो यार, पार्टली, लेकिन नाराज मत हो नहीं, यार. नाराज नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं पार्टली एग्री करता हूँ, क्योंकि
वैसे मैं शॉर्ट में सबने करा है शेयर मार्केट में, लेकिन गोल्ड में लॉन्ग करके काफी जन ने पैसा बनाया अभी, तो वो फ्यूचर में। ठीक है, आई वाज टॉकिंग, ओके चलिए। I can be wrong and I will be wrong in some market or the other. Okay. Thank you for proving me wrong. Who's next? सर मैं बोलूं सर? हाँ बोलो। आवाज क्लियर है सर मेरी? सर clear. नमस्कार शरद सर, नमस्कार समर्थ भाई, आपको मैं 1-1.5 साल से सुन रहा हूँ एंड बहुत अच्छा फीडबैक है आप लोगों का और मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। दो मैं 1 साल पहले मैं शरद भाई से बात करने की कोशिश करी, इन्होंने मेरे को धमका के बिठा दिया कि भाई अभी तो नया बंदा है, छोड़ दे मार्केट। एंड समझो शरद भाई मैंने मार्केट नहीं छोड़ी और मैंने लेकिन आपकी एडवाइस मानते हुए अपने लॉसेस बुक कर लिए एंड अब मुझे काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला आपसे। काफ़ी कुछ मैं हेज भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, जिससे मुझे फायदा तो कम हो रहा है, नुकसान कम हो रहा है। ठीक है, मतलब नुकसान की साइड से बच रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन मेरा ये था कि अभी आने वाले टाइम पे ये जो नेक्स्ट मंथ से कॉल और पुट को ये कह रहे हैं कि जो हम हेजिंग के लिए हम एक कॉल या पुट हम बेच देते थे एंड वो कह रहे हैं कि अब आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी इन केस वो उल्टा होता है, तो उसका कैसे है? हेलो सर मैं हेलो 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 In case you are asking for call and put, hello. जी हाँ सर, अभी चेंज हुआ ना जो रूल, उसके रिगार्डिंग में मैं पूछना चाहता था। No, in the money call you have to compulsorily take delivery. Hello. If it is out of the money call, then also you are supposed to take the delivery if you Nothing is required. Look. Sorry? If it's out of money, nothing is required. Okay. Some echo is coming. Can you mute for a second? Hello. Yeah, what I'm saying is for out of money, no action is required. But at the money, you have to monitor the position in the second day, finally, last half an hour. Deep in the money, you have to compulsorily take either delivery or need to square off the position. Also, you need to keep in mind if you are doing something covered call, protective put, those kind of stuff, and there the futures are all future price is higher than the or like the call goes deep in the money, then also no action is required. So you can consult your broker how to deal with the situation, but deep in the money you will need physical settlement. It will be carried out at the broker level.